Hey, welcome everyone. This side Sagar Chauhan and welcome to the channel Unique Editing. Today I am going to tell you how to change background from your photos. वो भी एंड्रॉयड की हेल्प से। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हम बेसिकली स्नैपसीड ऐप का यूज़ करेंगे। स्नैपसीड ऐप आपको प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। अगर आप स्नैपसीड ऐप का यूज़ करना सीख गए तो आप आपकी फ़ोटो की बेसिक टू एडवांस लेवल तक की फ़ोटो एडिटिंग बहुत आसानी से कर पाओगे। So let's start the video and go to the screen. This is first interface coming after click on the snapseed. Then click on the plus icon and import the photo. आप वो फोटो इंपोर्ट कर लीजिए जिसका बैकग्राउंड आपको चेंज करना है। आफ्टर इंपोर्ट ऑफ द फोटो चूज द फिल्टर। जो फिल्टर फोटो के लिए अच्छा लगता है उसे चूज कर लीजिए। Then click on the right option. Then click on the middle option, edit tool. Then आपको यहाँ पर बहुत सारे tools मिलेंगे. Then click on the third last option, double exposure. After click on the double exposure, click on the first option, add image. यहाँ से आप वो image add कर लीजिए जो आपको background के back में रखना है। After import of the photo, adjust it and click on the middle point filter. यहाँ पर आपको बहुत सारे फिल्टर्स भी मिलेंगे आपके फोटो के बैकग्राउंड में ऐड करने के लिए। आप उनमें से एक जो आपके फोटो के एडजस्ट होता है वो चूज कर लीजिए। थर्ड ऑप्शन में आप क्लिक कर पर आपके बैकग्राउंड की ओबेसिटी भी कम या ज़्यादा कर सकते हो। बैकग्राउंड की ओबेसिटी थोड़ी ज़्यादा ही रख लीजिए। देन क्लिक ऑन द राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन पर क्लिक करके आप स्नैपसीड के मेन इंटरफेस पर पहुंच जाओगे। देन क्लिक ऑन द एडिट स्टैक। यहाँ पर अगर आपको फोटो एडिटिंग करते समय कोई मिस्टेक हो गई तो आप उसको अंडो या रीडो भी कर सकते हो। देन क्लिक ऑन द व्यू एडिट्स एंड क्लिक ऑन द डबल एक्सपोजर। देन क्लिक ऑन द मिडल ऑप्शन ब्रश। देन स्वाइप ऑन द फोटो जिससे आपका बैकग्राउंड सीन होना शुरू हो जाएगा। Then click on the decrease arrow and zero the double exposure. डबल एक्सपोजर का आप जीरो कर दो जिससे आप आपका जो मेन फोटो है उससे सीन कर पाओगे। ये देखिए आप इस फोटो को 2 फिंगर्स स्क्रीन पर रख के जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपको बैकग्राउंड इरेज करने में। अगर आपको बैकग्राउंड वापस लाना है तो क्लिक ऑन द इंक्रीज एरो एंड डबल एक्सपोजर को 100 पर लाकर रख दीजिए।
बैकग्राउंड इरेज करने के लिए आप इन दो ऑप्शंस का भी यूज कर सकते हो, इन्वर्ट एंड मास्क। मास्क से आपको बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। ये देखिए, ये जो रेड कलर का है वो आपका मास्क है, यानी मेन जो बैकग्राउंड ऐड करना है वो है। इन्वर्ट में आपका जो बैकग्राउंड चेंज करने से पहले जो ओरिजिनल बैकग्राउंड है वो दिखता है। आफ्टर कंप्लीट एडिट ऑफ फोटो, क्लिक ऑन द राइट ऑप्शन, देन क्लिक ऑन द साइड एरो, जिससे आप स्नैपसीड के मेन इंटरफेस पर पहुंच जाएंगे। देन क्लिक ऑन द थर्ड ऑप्शन, सेव, जिससे आपका फोटो गैलरी में आपके सेव हो जाएगा। अगर वीडियो का नॉलेज हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। अगर आपको आपके फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कैसे करना है ये जानना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करना एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। इफ नॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।